will invite Ajahn Kevali to give the dana reflection of the Anumotana Dhamma. Ask permission from Luang Por Passano and Luang Por Jundee and Ajahn Moshe to say a few words of appreciation. I believe that almost everybody probably knows the word Anumodana. Is it also Hindi? Yeah. Okay. It means more or less we have a heart of joy in the receiving of all the support and all the offerings of the meal and the lodging and the place of being able to be here and the journey and everything, a heart of joy and receiving that, and really happy with the effort that all of you have put into Dhammarama, and the fact that we are meeting together and that we're sitting meditation, that we're listening to the teachings together. There's so many things that one can actually say are uplifting, and it is many times these small personal contributions or big personal contributions that everybody makes that uplift the mind for getting a sense of wholesome pride, one can say, like a sense of recognition that one has done good karmic deeds that then helps us to be able to feel really pleased in that sense, that we're peaceful and can drop the worries and concerns and close our eyes and meditate. And in our monastery, Wat Pah Nanachat, this is also something that many times uplifts the hearts, both of those who receive the goodness and those who give the goodness. And it uplifts the minds and the hearts in a way that you can't really pin down. Sometimes it's a very small thing. It could be on the regular alms round that there is a very old person coming out that one hasn't seen for many months, or a very young kid makes the effort or takes interest in what the elders are doing, and or it could be a tiny little thing that somebody makes way for you and opens the door and lets you pass and gives you the convenience that he or she would otherwise have taken by herself. And so this is like a very, very small. These are very small little observations that we make that actually help us a lot. Sometimes it's what Luang Por Jundee talked about yesterday, a real act of renunciation, like that we let somebody else have something that we actually wanted to have, or make way for somebody, or sacrifice a seat, for example, in a car for somebody else. This is also part of German culture, even, that young people get up in the underground for elder people. And I remember one of the last very touching incidents before I left to Thailand, in Berlin in the underground, was a young man from, I think, Turkey, because in Germany there's many Turkish people, and his grandmother that just visited Germany for the first time, and they were very, very warm and
friendly to each other, and the grandson was so proud to introduce the grandmother to what life in Berlin is, and so polite and so beautiful to see. And not only did the grandson uplift his grandmother's heart, but also my heart. For anybody who sees these little generous acts, or acts of loving kindness, one can say, and acts of friendliness, and it has a knock-on effect. It just like captures one's say feelings very, or like catches one very, very positively, and inspires. So when we say Anumodana, it's just a expression of like, yes, we're inspired. Like there's mutual inspiration going on, and there's a way of contributing to something that is beyond one's personal little world, because one shares, one makes one's heart get bigger, wider, and then surely it also affects people that one has never thought of. And so this is something about the culture that we live in that we need to consciously cultivate. I hope that we can make an effort together to implant this more and more back in Delhi, where I'm sure there's many areas where it already exists or has existed, but there's a little concern that what we've been talking about a little bit in the questions and answers, that sometimes stress, selfishness, turbulent phases of life don't permit it anymore to have the time just to step back and let somebody else have a convenient situation, but we rather grab for ourselves in order to compensate for the suffering that we have in our own little agendas. So I hope that we can build up this place in this sharing way, not only because the monks are relying on this goodness of the householders and people that work hard to make all this possible for us to come, but also for ourselves and for each other, and for the feeling of having contributed and not just simply consuming. So this is very nice if we do that regularly, and we can find opportunities for that. Yesterday there was a question what to do when times are very stormy or like very turbulent, I think was the word. And I know very well, like these times they do exist even in monastic life, and stormy weather, lots of things to do, and one feels like not too grounded, because not always things are supportive for a peaceful mind. But there's sometimes there's so many little practices that we can do that can uplift the mind and can be a steady basis for us to feel worthwhile of all our efforts. And they sometimes really contribute a lot. A small little gesture sometimes really goes a long way, and some of the meditations that don't work, they somehow represent that we've been very hasty and not taking the time to look after these little practices. So if we can maintain our mindfulness also towards each other and towards those little gestures of support, it can be anything from cleaning the place to offering a ride for somebody who needs to go back and has nobody to take him or her, or anything like putting a plaster, a band-aid on a bleeding wound. Otherwise, like we wouldn't really support each other if we didn't have these little generous acts. And one of the regular things that in the culture of monastic life, the Buddha very wisely established is that the monks are always there needing to be fed. So they're always here for waiting for say, giving rise to an opportunity to goodness. And it feels very uplifting to see this culture of
contributing, sharing, sacrifice, giving in Asia, for many of us coming from countries like Germany, England, Australia or America, to see that cultivated, or like that young grandson in coming from Eastern Europe or from Turkey, from the Arab world. It feels very uplifting to see that hospitality and the feeling of going out of one's way to have somebody else get the more convenient part of life. And so the Sangha many times feeds not only materially on this, but like from the heart we get, like, we feel this sense of, this is beautiful that we're part of this giving and supporting each other, and it can take us a long way. Many meditations or so, they just need that little feeling of, yes, I'm good, yes, I've done something really nice, I must have deserved to be able to be peaceful right now. For a critical mind, it's very, very important. Say, one of the most joyful meditations that I experienced was actually triggered immediately by relinquishing a cup of cocoa, which is like the object of desire in the afternoon for most monks, and to another monk. And I just felt so happy about the fact that I was able to just do that actually afterwards, like, my meditation went really, really nicely. I was able to kind of be really satisfied, happy, and not feeling lacking anything. And just the opposite, that I've given something away and I felt really, really pleased, and was able to then shut down all my worries, anxieties, and my inner skepticism. Is this going to work? Is this not going to work? Just the whole happiness of dana, and even if it's just a small thing. And Luang Por Passano just mentioned that we have this system of attending, like that the junior monks attend the senior monks, and the lay people attend the monks, and the pakhaos, they run around attending the monks. Everybody's always attending each other, so there's a huge culture of attentiveness, and we always look out for something that we can do, and that's a part of the things that in the monastery or in a situation on a visit like this, actually it enhances our whole sense of practice, and not being self-centered, but always being attentive to each other. So I offer that for reflection, and invite Dr. Da to translate, and then we can give the blessing as a recognition of the goodness that all of you have been offering to us, and then take the meal. आजान केवली ने अपना वक्तव्य शुरू किया लुंग पोर प्रसन्न और लुंग पोर जुंदी से परमिशन लेके कि मुझे अनुमोदन पे कुछ शब्द बोलने को कहा गया है। आपने कहा कि अनुमोदन शब्द हिंदी में भी उसका वही अर्थ रहता है कि हम किस तरह से किसी के अच्छे कामों का अप्रिसिएशन करते हैं। तो आपने मत कहा कि जो भी हम सब लोग यहाँ कर रहे हैं धम्मारामा के लिए, जितना एफर्ट कर रहे हैं, उसके प्रति उन्होंने अपना अनुमोदन किया और बताया कि यहाँ पे जितने भी गतिविधियाँ हुई, हम सब साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं, साथ बैठ के भगवान की वाणी के बारे में शिक्षा सुन रहे हैं। तो इन सब कामों में जो छोटे छोटे भी हमारे कंट्रीब्यूशन रहते हैं, कोई करता है, उनसे मन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। हमारा चित्त जो है शांत होता है, प्रसन्न होता है, और जो कुशल काम करने से एक अपने मन में तसल्ली आती है, जिस पे फिर साधना भी सुलभ होती है। उन्होंने बताया कि जैसे वाट पा नानाचात में देखते हैं कि किस तरह से लोग दान करते हैं, शेयर करते हैं वस्तुओं को। जब वो आम साउंड पे जाते हैं, पिंडपात पे जाते हैं, देखते हैं कभी कभी कोई एक बहुत बूढ़ा आदमी बहुत महीना बाद आ रहा है और कुछ भोजन दान कर रहा है, या बहुत छोटा सा बच्चा है वो देख रहा है बड़ों को और वो भी दान कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें भी हमारे मन के जो
आयाम दरवाजे खुलते हैं और ऑब्जर्वेशन से छोटी बातों से बहुत सुकून मिलता है। ये जो सच्चा निष्क्रमण है, रिनंसिएशन है, वो उसका तात्पर्य यही है कि हम किसी को बड़ी सुगमता से, बड़े अच्छे मन से कुछ दे रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, बहुत छोटी सी चीज़ हो। एक बस के अंदर किसी दूसरे को अपनी सीट दे रहे हैं। तो आपने एक उदाहरण दृष्टांत दिया बर्लिन का कि एक बार वो अंडरग्राउंड में देख रहे थे कि एक टर्किश फैमिली आई हुई थी, उनकी दादी को उनका जो पोता है इतने प्यार से सब चीज़ें समझा रहा था, देख रहा था। तो उस बात को देख के केवल उनकी दादी प्रसन्न नहीं बनते, बताते हैं अजान जी कि हमको भी बहुत अच्छा लगा कि कितने सद्भाव से, कितने मैत्री से वो बच्चा अपनी दादी के लिए समझा रहा था। तो इस तरह के दूसरों में अच्छे भाव देख के हमारा मन भी प्रसन्न होता है और हमें प्रेरणा मिलती है, एक सपोर्ट मिलता है हमारी साधना के लिए। हमारा दिल जो है, जो संकुचित रहता है, वो बड़ा बनता है। और ये जो क्वालिटीज़ हैं हम आजकल कल्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की आपाधापी में लोगों के पास ऐसा समय नहीं रहता। लेकिन बहुत स्ट्रेस है, टर्बुलेंस है, तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह की अच्छी क्वालिटीज़ बनाना मुश्किल पड़ता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इस तरह का एक स्थान बनाया गया और सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, जो गृहस्थ लोग हैं वो उन पे भिक्षु रिलाई करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी परंपरा बनाई गई है। सामान्यतः हम देखते हैं कि मोनास्टिक कम्युनिटी में भी जैसे जो वहाँ भिक्षुगण हैं, वो ऐसा नहीं कि हमेशा ही कंडीशन सपोर्टिव रहती हैं, वहाँ पे भी टर्बुलेंस भी होती है, मन में बेचैनियाँ भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं। लेकिन उन परेशानियों में भी अगर हम छोटा छोटा काम कोई ऐसा कर दें जिसमें कि स्वार्थ ना हो, जिसमें दूसरे का भलाई हो, तो उससे भी बहुत हमारी साधना में लाभ होता है। कि जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि एक शाम के समय चाय पीते हैं वहाँ भिक्षु लोग, एक कोको का जो कप पीना बहुत सब लोगों को अच्छा लगता है। अगर वो छोटा सा एक गेस्चर बता रहे थे कि मैंने एक बार अपने किसी साथी के लिए छोड़ दिया, नहीं पिया, उसके बाद उस प्रसन्नता से जब मैं बैठा ध्यान करने तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान हुआ, क्योंकि चित्त शांत हो गया, मन में अच्छा लगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनके ऊपर भी ध्यान देना हमारी साधना में काफ़ी मदद करता है, हमारी सजगता बढ़ाने में, माइंडफुलनेस बढ़ाने में मदद करता है। एक को बहुत छोटी छोटी उदाहरण आपने दिए, कुछ किसी सफाई करना, किसी को छोटा कुछ वस्तु दे देना, या किसी कोई बीमार है उसको चोट लग गई है उसके प्लास्टर लगा देना, इस तरह के छोटे छोटे जो जेनरॉसिटी के एक्ट्स हैं, उनसे भी बहुत मन प्रसन्न होता है। तो प्रसन्नता के आधार पर साधना भी सुधर अच्छी होती है। आपने फिर एक और बार हमारा चीज़ की ओर ध्यान दिलाया कि भगवान ने जो परंपरा बनाई है भिक्षु संघ की, कि वो हमेशा गृहस्थों पर निर्भर हैं अपने भोजन के लिए, और इस तरह से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है गृहस्थों को भी कि अपना जो आत्म केंद्रित जीवन है, स्व केंद्रित जीवन है, उससे बाहर निकल के चीज़ें शेयर करें, लोगों के साथ बांटें, और इस तरह से कुशल चित्त की बनाने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। सामान्यतः जो पाश्चात्य परंपरा के लोग हैं, पाश्चात्य शायद इंग्लैंड के हों, यूरोप के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, उनको एक आत्म केंद्रित जीवन जीना की कल्चर रहता है। तो वो इस तरह की हॉस्पिटैलिटी को, इस तरह के सहभाग को देखने से बहुत प्रसन्नता होती है। हमारे सामान्यतः बहुत क्रिटिकल माइंड्स रहते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह के अच्छे काम देखते हैं तो चित्त शांत होता है और साधना भी अच्छी होती है।
उन्होंने बताया कि जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि एक परंपरा है कि जो जूनियर मॉन्क्स हैं वो सीनियर मॉन्क्स को अटेंड करते हैं, और जो ले पीपल है वो सभी मॉन्क्स को अटेंड करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ये सेवा का भाव भी जो है मोनास्ट्री के अंदर ये ऐसा कल्चर बनाता है कि हम एक दूसरे के प्रति सेवा भाव रखते हैं, और हमारी जो आत्म केंद्रित आदतें हैं वो थोड़ी कम होती हैं। आपने फिर कहा कि ये कुछ विवेचन आपके सम्मुख उन्होंने रखे अनुमोदन के बारे में, और इसके बाद हम जो चैंटिंग है वो करेंगे।